गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आप बीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों के साथ पिछली क्लास में एंट्रोपी और प्रायिकता के मध्य संबंध को मैंने निकाला था, डिराइव किया था। आज भी उसी की कंटिन्यूटी में हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जब हमने एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन निकाला था S इज इक्वल टू K L N W, उस पर हमने देखा था कि S को हमने एंट्रोपी को S से व्यक्त किया था, प्रोबेबिलिटी को हमने W से डिनोट किया था और K एक हमारा नियतांक था। और हमने यह देखा था कि इस रिलेशनशिप में जो K नियतांक है वो आगे हम इस चीज को पढ़ लेंगे कि यह नियतांक हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर ही आता है। जनरली हम ये मानते हैं कि एंट्रोपी जो है, जब हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें बहुत आसानी से किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर्डनेस को व्यक्त करती है, या हम ये कहें कि किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर्डनेस को व्यक्त करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी एक सपोर्ट करती है। जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा उतनी ही उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ऊष्मागतिक प्रायिकता ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ऊष्मागतिक प्रायिकता होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। अर्थात यदि हम कोई सिस्टम लें, सिस्टम मीन्स हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अगर हम ये पूछें कि एंट्रोपी हमको निकालनी है किसी एक पदार्थ की, अगर वह सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, तो इसी के आधार पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं जिस सिस्टम की जिस स्थिति में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उसी स्थिति में उसकी सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी और ऊष्मागतिक प्रायिकता भी होगी। अर्थात गैसियस स्टेट most disordered state है, so the maximum entropy will attain in the gaseous state and the minimum entropy will attain in the solid state. As we know, in the solid state the atoms are regularly arranged, so I think you can easily correlate and understand the entropy and probability with the disorderedness of the system. फिर भी हम और आसानी से समझने के लिए इसका एक और उदाहरण लेंगे कि मान लो हमने कंसीडर किया कि वी हैव अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है और हमने उस कंटेनर को ऐसा कंटेनर माना है या हमने ऐसा कंटेनर लिया है जिसको हमने एक पार्टीशन के द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, और हमने यह देखा कि डिवाइड करने के पश्चात भी या 2 सेपरेटेड चैम्बर्स होने पर हमने दोनों चैम्बर्स में अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल से या अलग अलग गैसेस को हमने फिल कर दिया, बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द 2 डिफरेंट गैसेस प्लेस्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेसल आर इक्वल। Such type of system has some arrangement as all the molecule of one gas are in one part and all the molecules of the another gas are in the other part of the vessel। हमारे पास इस सिस्टम में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि गैस के अणु जो हैं, सब अणु विभाजक के एक ओर रहते हैं और दूसरी गैस के सारे अणु जो हमारा डिवाइडर है उसके दूसरी ओर रहते हैं। अब हमने क्या किया, उस सेपरेटर जो डिवाइडर था, हमने जो सेपरेट कर रहा था उस शीट को हमने हटा दिया। जब हम उस शीट को हटा देते तो हमने क्या देखा, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन का फिनोमेना होगा, अलग अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दोनों गैसें एक दूसरे में डिफ्यूज हो गई हैं और संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से दोनों गैसेस के अणु जो है वो विसरित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी पहली कंडीशन थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि पहली कंडीशन में हमने देखा था कि हमारी दोनों गैसेस जो है वो सेपरेटर से सेपरेट आउट है, लेकिन जैसे ही हमने उसके डिवाइडर को हटाया दोनों गैसें मिलकर एक गैस हो गई और हमने देखा कि जो हमारा निकाय है, हमारा सिस्टम है, उसमें ज्यादा अव्यवस्था हो गई, या हम ये कहें उसमें मिक्सिंग हो गई मॉलिक्यूल्स की। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग हुई
गैस की एंट्रोपी में भी वृद्धि हो गई। इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया कि जो हमारा टेम्परेचर था हमने उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया, वही नियत टेम्परेचर रहा। लेकिन द्वितीय स्थिति में जब हमने डिवाइडर को हटा दिया, हमने क्या देखा कि उस नियत ताप पर प्रत्येक गैस द्वारा घेरा गया आयतन जो था वो डबल हो गया। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस इन adiabatic reversible process, but its temperature decreases and the entropy of disordered remains constant. एक गैस के यदि उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार में आयतन बढ़ता है परंतु ताप घटता है, साथ ही उसकी एंट्रोपी नियत रहती है, तो यह अव्यवस्था डिसऑर्डर्डनेस जो है वो हमारी स्थिर बनी रहती है। इसी तरह ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर हमने देखा कि एक बंद तंत्र में केवल वो ही प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती है, वो ही प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिनके लिए तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, और यह या हम ये कहें कि सीमांत अवस्था में यह स्थिर रहती है। कोई भी प्रक्रिया या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें एंट्रोपी में डिक्रीज हो रहा है वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं होगी। एक बार हमने पुनः पिछले सेक्शन की इक्वेशन S इज इक्वल टू के ln W को कंसीडर किया और इसमें हमने इस इक्वेशन को लेकर ln W का हमने वैल्यू रख दिया। So S is equal to K ln W is equal to K, the value of ln W which we have already taken in previous section, that this is equal to N ln N minus summation Ni ln Ni. Substituting this value here and again using the equation number 14 which is equal to Ni is equal to N upon Z e raised to the power minus of beta epsilon naught. Again I have substituted the value of Ni over here. So S is equal to K ln W is equal to K N ln N minus summation of Ni ln Z minus ln Z minus beta epsilon I. Substituting the value of this Ni from here to here and get this equation. Or further, after simplifying, I will get S is equal to K N ln N minus N ln N plus ln Z summation of Ni plus beta summation of epsilon I Ni. As we know that summation of Ni is the total number of molecules of the gas in a container, that is equal to N. So, and further, if we consider the internal energy of the gas molecules, which is denoted by summation of epsilon I Ni, then this equation comes S is equal to K ln W is equal to, this first term will be cancelled out with this second term, and here we have ln Z summation Ni, summation Ni is N by multiplying this K, so it is equal to Nk ln Z plus K beta, and this summation of epsilon I Ni is the internal energy of the gas molecules. So I am writing here as U, and this equation is denoted by equation number 13. For the thermodynamical principles, we know by the second law of thermodynamics, delta Q is equal to TdS, that is equal to du plus Pdv, or del U over del S keeping the volume constant is equal to T, or del S over del U keeping the gain volume constant is equal to 1 upon T. Differentiating this equation number 13, del S over del U, differentiating this equation with respect to internal energy keeping the volume constant, so it remains Nk upon Z del Z over del beta keeping volume constant, del beta over del U keeping gain volume constants, plus K beta U
plus Ku del beta over del U, keeping the volume constant. As we know from the definition of the internal energy partition function, and the number of particles in ith cell will be given as del Z over del beta, keeping the volume constant, is equal to minus of summation epsilon I exponential minus beta epsilon I, or finally this is equal to minus Zu over n. After substituting this value in equation number 15, we'll get del S over del U, keeping volume constant, is equal to Nk upon Z within the bracket minus Zu upon N, del beta over del U plus K beta plus Ku del beta over del U, and finally it is equal to K beta. So again from equation number 14 and 16, this is your equation number 16 and this is equation number 14. After considering both these equations, K beta is equal to 1 upon T, or beta is equal to 1 upon Kt. In this way, beta is determined in terms of temperature. Hence, the number of phase point in ith cell defined in terms of temperature, that is equal to Ni is equal to N upon Z exponential minus of epsilon I upon Kt, which is represented by equation number 18. Where this Z is the partition function. We know about the partition function because in my previous classes I have already taught you about the partition function. So again I am taking the equation number 12 of previous section, or previous section means previous class, previous article. So this is denoted that Z is equal to summation of exponential minus of beta epsilon I. So finally this Z is equal to exponential of minus epsilon I upon Kt, and this is the equation of Maxwell-Boltzmann distribution function. यह है हमारी Maxwell-Boltzmann distribution function की समीकरण है. Now we consider again the internal energy of the system. The internal energy of the system, U is equal to summation of epsilon I Ni, or this is equal to N upon Z summation of epsilon I exponential minus epsilon I upon Kt. Now differentiating this Z with respect to T. So we have dz over del T is equal to 1 upon Kt square summation of epsilon I exponential of minus epsilon I upon Kt. Again from equation number 20 and 21, this U is equal to nkt square upon Z dz over dt, or this is equal to nkt square, this 1 upon Z is taken as ln Z, so d ln Z upon dt. Again from equation number 13, equation number 13 is S is equal to k ln W is equal to nk ln Z plus k beta U. So by substituting this value from equation number 13, as this is equal to k beta U, हमने इसको देखा, so S is equal to nk ln Z plus U upon T, which is denoted by equation number 23. Now we consider the Helmholtz function. Helmholtz function mathematically is denoted as F is equal to U minus Ts. So when you substitute U minus Ts, this is equal to minus nkt ln Z. So if the partition function Z is known, then all thermodynamic variable can be determined. We consider our first example. Say for example we consider a system of n particles and n cells in their phase space. Also we suppose that the energy of a particle is same in all cells. Means the cell number 1 has energy epsilon 1, cell number 2 has the energy epsilon 2, cell number 3 has the energy epsilon 3, and ith cell has the energy epsilon I, but all the cells have the same energy, so we can write down that epsilon 1 is equal to epsilon 2 is also equal to epsilon 3 up to epsilon I, and all these can be written as equal to epsilon. So by using this in the partition function of the system, this Z is equal to summation of I is varying from 1 to n
exponential minus epsilon I upon kt, and this epsilon I can be written as epsilon. So this is equal to n epsilon, because we have the n number of cells. So n epsilon, n we can take here. So n exponential minus epsilon upon kt. Again from equation number 18, by substituting the value of this partition function, so this ni becomes n upon n exponential minus epsilon upon kt into exponential minus epsilon upon kt, and finally this is equal to capital N upon n. It means, what is the meaning of this? Capital N upon n means all the particles are equally distributed in cell, as it was expected, because we have assumed that all the particles are equally distributed, and we have proof from here this equation. We can say that the particles are equally distributed in cell. Now we consider again the internal energy from the equation number 22. We can write down the direct equation that U is equal to nkt square dln z upon dt, or it is equal to n epsilon. It is clear that the energy of each particle is epsilon. Now we consider the entropy from equation number 13. S is equal to nk within the bracket ln small n minus epsilon upon kt plus n epsilon upon t, and that is equal to nk ln. So in this example, what we have observed, that the distribution, internal energy and entropy all does not depend upon the temperature. Now we consider again the second example. In the second example, we have also considered that a system have n particles and 3 cells in their phase space rather than n cells. In this case, in this example, we consider there are 3 cells in the phase space. Suppose the first cell has energy 0, second cell has energy epsilon, and the third cell has energy twice epsilon. Now in this case, the partition function is z is equal to epsilon is varying, summation is varying from 1 to 3 exponential minus epsilon I upon kt. So z is equal to 1 plus exponential minus epsilon upon kt plus exponential minus 2 epsilon upon kt. The dimension of this ratio epsilon upon k is same as that of temperature. Therefore, this epsilon upon k is known as the characteristic temperature, and it is represented by theta. So this is represented as z is equal to 1 plus exponential minus theta upon t plus exponential minus 2 theta upon t. Putting these values of z and epsilon in equation number 18, the number of particles in the corresponding cells are n1 is equal to n upon 1 plus exponential minus theta upon t plus exponential minus 2 theta upon t. In the second case, n2, or in the second cell, we have n2 is equal to n exponential minus theta upon t upon 1 plus exponential minus theta upon t plus exponential of minus 2 theta upon 2. And finally, I can write down n2 is equal to n upon 1 plus exponential of minus theta upon t plus exponential of theta upon t. Similarly, we can also consider the number of particles in the third cell, which is denoted by n3, that is equal to n upon 1 plus exponential theta upon t plus exponential 2 theta upon t. So now we can conclude that the temperature, which is very small in comparison to the characteristic temperature, that means if t is very small in comparison to theta, both theta upon t and 2 theta upon t will be greater than 1, and exponential of minus theta upon t and exponential of minus 2 theta upon t are less than 1. In that case, or in this case, n1 is equal to n and n2 and n3 are negligible. What does it mean? It means that all the particles are only in cell number 1. In the second situation, when we consider when t is very greater than theta, both
theta upon t and 2 theta upon t are less than 1. So the exponential of minus theta upon t and exponential of minus 2 theta upon t will be greater than 1. That means the value of all exponentials are same. In this case, n1 is equal to n2 is equal to n3 is equal to n upon 3 means all the particles are equally divided amongst the 3 cells. So the number of particles in each cell will be equal to n by 3. In third case, when we consider that this temperature is equal to the characteristic temperature, means if T is equal to theta, then N1 comes out to be 0.67 N, N2 comes out to be 0.24 N, and N3 comes out to be 0.09. So now in the next class, I'll consider one more example about the entropy and probability. So for till that date, thank you.